Hello, this is Kashif Yaku. The topic for today's discussion is 30 ideas to improve employee engagement and retention. ये टॉपिक मैंने पिक किया है from LinkedIn blogs, which was written by Laura Hedges on 23rd May 2022. इस टॉपिक में बहुत सारे एंगल्स कवर किए गए हैं कि किस तरह से आप एम्प्लॉय एंगेजमेंट और एम्प्लॉय रिटेंशन इंप्रूव कर सकते हैं. So this is very interesting topic and may be beneficial for many of us. So सबसे पहले तो हम बात करते हैं एम्प्लॉय एंगेजमेंट और एम्प्लॉय रिटेंशन क्या होती है. एम्प्लॉय रिटेंशन और एम्प्लॉय एंगेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इट्स अ मेजर प्रॉब्लम दीज डेज. How to retain employees. Retain का मतलब how to keep employees within your organization, and how to engage employees in different activities so that they can feel motivated enough to stay in the organization. So it's always crucial for many organizations to keep the talent. अगर हम employees turnover की बात करें तो employees turnover is very expensive, and it's costing trillions of rupees and dollars to every country. So जब भी कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो उसकी जगह न्यू हायरिंग costs very much to the organization. As per one estimate, it's 1/2 to 2 times of employee annual salary. और there are penalty of reasons कि आपको क्यों एम्प्लॉय रिटेंशन पे काम करना चाहिए या क्यों एम्प्लॉय रिटेंशन ऑर्गेनाइजेशन को मैटर करती है. फॉर एग्जांपल, अगर एम्प्लॉय आपका रिटेन रहता है, आपके एम्प्लॉयज छोड़ के नहीं जाते, एम्प्लॉयज आर टेंड्स टू स्टे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी कांस्टेंट रहती है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी कंसिस्टेंट रहती है इन अ डायरेक्शन वेयर यू आर लीडिंग योर ऑर्गेनाइजेशन टू. और की नॉलेज और की स्किल्स जो एम्प्लॉयज की हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रहती है. इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज का मोरल हाई रहता है, इट इम्प्रूव्स, एम्प्लॉय की एंगेजमेंट इंक्रीज होती है, और एज अ रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस स्मूथ रहती है, ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव करती रहती है, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंक्रीज करती रहती है. अगर एम्प्लॉयज आपके छोड़ के नहीं जाते तो इसका मतलब है कि योर ऑर्गेनाइजेशन is is in a direction to achieve its objectives, and your teams are stable, your teams are passionate, your teams are qualified. और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में कौन काम नहीं करना चाहेगा. So let's talk about these 30 ideas to improve employee engagement and retention. First of all, listen to employee feedback. अब एम्प्लॉय फीडबैक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी एम्प्लॉय के लिए इंपॉर्टेंट है, और एम्प्लॉय ये चाहते हैं कि उनका फीडबैक को रिस्पेक्ट दी जाए, उनका फीडबैक सुना जाए, उस पे उसको उसको एटलीस्ट पेशेंटली लिसन तो किया जाए ना, उसको पेशेंटली सुना तो जाए ना. तो जब एम्प्लॉयज को ये फीलिंग आती है कि देयर लीडरशिप इज लिसनिंग टू देम, तो इट मेक देम फॉर विनिंग कॉर्पोरेट कल्चर, it make them comfortable to work over there. Second is create an inclusive work environment where everyone feels like they belong. तो आप ऐसा safe environment create करें कि it is valued for who they are at work and can lead to success. देखें, जब employees feel करेंगे कि they are safe and they are comfortable, तो they will feel like to be succeed and to stay within the organization, to grow within the organization. Third is offer flexible working arrangements. Now this is interesting. Flexible working arrangements means give your employees an option that can make employees happy and willing to recommend the company to other employees as well. Let me go back. Okay, so let's move to next slide. Pay employees fairly. Yes, this is very important. I tell you, this is very important, because when you're not paying employees fairly, so employees will not feel comfortable, because जब
वेरिएशन बहुत ज्यादा होगी एम्प्लॉयज की सैलरीज में, तो एम्प्लॉयज उस पर कंफर्टेबल नहीं होंगे, एम्प्लॉयज उस पर हेजिटेंट रहेंगे टू एक्चुअली वर्क. सो higher salary is not always the top reason for employees to look for new job, right? But paying your employees fairly we provide them plenty of incentives to stay. Your employees should feel comfortable within your organization. For example, audit your compensation to detect and correct any pay inequities, particularly for employees from underrepresented groups and for women, including mothers of young children, etc. Right? The next is give one-time cash incentive. Yes, this is one of the important factors as well. Offer bonuses, work from home stipends, or help in paying down student loans. Perks like these can foster loyalty and make employees feel appreciated. So the purpose is to give your employees feelings of comfort, feelings of not to actually look for other companies for their job and recommend this company. तो वो किस सूरत में करेंगे, जब उनको आप एक्चुअल में रिटेन करने की कोशिश कर रहे होंगे. Be transparent about compensation. Being transparent about salary can close the pay gap. Means what? Means आप जो भी सैलरी स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं, जिसकी जो जो सैलरीज हैं, डोंट आस्क देम टू हाइड फ्रॉम देयर कोलीग्स. सो अगर जितना ये आपका कंपनसेशन सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा, उतना एम्प्लॉयज को कंफर्ट होगा कि व्हाट्स देयर नेक्स्ट टारगेट, वेयर दे वांट टू बी. Provide generous benefits including mental health care for employees and their families. So देखें, एम्प्लॉयज की मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर वो मेंटल हेल्थ, अगर वो कंफर्टेबल होंगे तो ही दे विल परफॉर्म बेस्ट फॉर योर कंपनी, राइट? तो वो कंपनी में अगर इफ दे आर हेल्दी, सो दे विल प्रोवाइड हाई क्वालिटी प्रोडक्टिविटी. सो इट्स बेटर फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन एट द एंड. सो support working parents by offering childcare benefits. Look, there are parents जो के especially mothers जो के काम कर रही होती हैं and their kids are with them. So बहुत सारी mothers जो हैं वो jobs छोड़ देती हैं because their child care, their organizations are not providing those child care benefits. So how crucial childcare is keeping parents in the workforce. So अगर आप देखें, if you have good workforce और उसको आप इस वजह से मिस कर रहे हैं, इस वजह से कोई एम्प्लॉय आपको छोड़ के जा सकता है, तो you should work on those retention techniques. So you can support working parents by offering on-site daycare centers, maybe some backup child care and cash subsidies for the care if it's not on site, right? Next is, when recruiting, be realistic about the job up front. It's important during the recruiting process to disclose to the candidate any challenges with the role or the company they may face if they're hired. मतलब अगर एम्प्लॉयज को कोई चैलेंज फेस करना पड़ सकता है, तो उसको पहले बताएं when you are hiring them, so candidate won't feel betrayed by any surprises after they join the company. If they know that they are getting into before they start, they will better set up for the success, because they will plan according to that. So okay, make a strong first impression with your onboarding program. Welcome newcomers with effective onboarding process. Is what देखें, जब भी आप एम्प्लॉयज को न्यू एम्प्लॉयज हायर करते हैं, तो देयर शुड बी मेंटोरिंग प्रोग्राम फॉर न्यू एम्प्लॉयज. जब न्यू एम्प्लॉयज के लिए मेंटोरिंग प्रोग्राम होगा, तो देयर फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव एक्चुअली प्लान दैट फर्स्ट इंप्रेशन, कि आपने
आप उनको प्लान करके बता रहे हैं कि व्हाट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज, how this organization can benefit, how they can actually grow within the organization, and that is very important. Pair with mentor. So next slide is the same. Assign a mentor to new employees to make them feel welcome and provide guidance, and also give some benefits to mentors so that they can actually feel motivated to mentor the newcomers. Conduct employee stay interviews. If your employees are leaving, अगर कोई employees आपके छोड़ के जा रहे हैं, तो ask employees that they envision for their future or at the company, how their jobs can be improved. उनको जो भी उनको problems आ रही हैं, you can discuss that. अगर वो फिर भी if they want to go, so वो इस तरह से जाएंगे कि they can always come back, right? Give positive exit interviews to encourage former employees to come back anytime. Okay, this exercise will give employees a good gesture from the company. People are leaving, but you're giving them good gesture so that they can come back anytime if they feel like this organization was better for them. Promote internal mobility. Promote the opportunity to move around within the company to increase retention. This is very important. जब आपके पास कोई एम्प्लॉयज एक ही डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा अरसा रहता है, तो उसकी वो मोटिवेशन, वो एनकरेजमेंट, वो रीजन टू स्टे में गैप आना शुरू हो जाता है. तो इसलिए जब आप एम्प्लॉयज को इंटरनल मोबिलिटी देंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में मूव करेंगे, तो दे विल कीप देमसेल्फ इन लर्निंग एंड दे विल कीप देमसेल्फ इन इम्प्रूविंग देयर स्किल्स. कैरियर डेवलपमेंट. यस, अब ये वो चीज है जिसपे बहुत ऑर्गेनाइजेशन, कम ऑर्गेनाइजेशन शायद काम कर पाती हैं. एस्टैब्लिश कैरियर डेवलपमेंट प्लान्स टू हेल्प एम्प्लॉयज चार्ट क्लियर पाथ टू ग्रोथ. इससे पहले कि एम्प्लॉयज खुद अपने कैरियर डेवलपमेंट पे बात करें, योर ऑर्गेनाइजेशन शुड, ऑर्गेनाइजेशन को काम करना चाहिए कि किस तरह से एम्प्लॉयज को बेहतर किया जा सकता है, किस तरह से एम्प्लॉयज को इम्प्रूव किया जा सकता है, किस तरह से एम्प्लॉयज की ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है कि वो ग्रोथ हो और इट ग्रो, एम्प्लॉयज ग्रो विद द ऑर्गेनाइजेशंस ग्रोथ. So create plenty of opportunities for upskilling. Offer plenty of opportunities for employees to keep their skills up to date. Make good use of the skills your employees already have. Again, आपको क्या देखना है कि आपके एम्प्लॉयज के पास ऑलरेडी कौन कौन सी स्किल्स हैं, किन किन स्किल्स में दे आर ऑलरेडी पॉलिश्ड. So you need to have skill based analysis और employee analysis के उनके पास कौन कौन सी skills हैं और कौन कौन सी skills की उनको जरूरत है. Encourage open and effective management to increase engagement. देखें, when you have open environment, अब जो है situations are changing, world is changing. You need to ask your employees what changes they are, what they are expecting. Is now the open door policy is no more effective. The boss, the CEO, the line manager, the manager should actually go to the employees and discuss different avenues with them, right? ताकि उनको जो जिस तरह से वो समझ रहे हैं, because they are working on the floor, उस तरह से आप ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव कर सकें. देखें, और इस तरह से एम्प्लॉयज भी अपने आप को, दे विल फील that they are part of the organization and they are part of the organizational growth. Keep your employees engaged within the company. Keep your employees engaged with different tasks, as we discussed earlier, within the company, so that they can keep themselves motivated. Promote healthy work-life balance. Yes, this is very important. Most of the employees fail to perform because of imbalance in their work and life. ये बहुत सारी आप काम पे ज्यादा टाइम दे रहे हैं, आप घर पे टाइम नहीं दे पा रहे, आप घर पे टाइम दे पा रहे हैं तो काम पे नहीं दे पा रहे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
You can promote healthy work-life balance by encouraging employees to avoid working excessive hours. अब within time, अगर आप time पे खत्म नहीं कर रहे तो it means there are other things that you are doing in the working hours. So take more vacation and turn off emails after hours to avoid the temptation to respond. So they should actually give that quality time to the organization and that quality time to their families both, right? So next is schedule recurring check-ins within with the employees check-ins. It's no longer enough for managers to say that they have open door policy. Leaders now need to schedule regular recurring meetings to talk to their employees about their workload and their job satisfaction. लीडर्स को उनके पास जाके अब बात करने की जरूरत होगी. Seek feedback often. Use employee feedback tools and surveys to take the pulse of company on regular basis. Then after you receive feedback, act on it. आपको ऑर्गेनाइजेशन में बार बार फीडबैक लेने की जरूरत है फ्रॉम योर एम्प्लॉयज. हाउ योर एम्प्लॉयज आर फीलिंग ऑन योर डिसीजंस. एम्प्लॉयज का क्या रिस्पॉन्स है. नॉट एंड दैट रिस्पॉन्स शुड नॉट बी ओनली फ्रॉम योर फेवरेट्स. ओपनली होना चाहिए. मे बी इफ यू कैन डू इट, मेक इट 360 डिग्री. Recognition of employees. Recognition praise a job well done by implementing an internal recognition program. Every employee want to be recognized. हर कोई चाहता है कि जो वो काम करे उसकी recognition हो, उसकी achievements की recognition हो, whether it's finishing a major project ahead of deadlines or reaching 5-year work anniversary. तो आप जो भी देखें, if some employee is with you for so many years, तो अगर आप उसकी उस वर्क एनिवर्सरी को, उस लॉयल्टी को अप्रिशिएट करेंगे, रिकॉग्नाइज कर देंगे, तो एम्प्लॉय विल स्टे सम मोर इयर्स विद यू मे बी. Offer a sabbatical. A number of companies including ARP, Intel, Cliff Bar and Patagonia offer their employees sabbatical after working at organizations for a set number of years. This is largely untapped way to boost your brand and retention. Stay true to your purpose. Yes, ये बहुत important है कि whatever your organization purpose is, employees want to work at companies that align with their values, with their purpose of life. That कि अगर organization improve कर रही है तो वो भी improve कर रहे हैं. अगर एम्प्लॉय कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे या एम्प्लॉय अपने पर्पस के साथ अलाइन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस कुछ और है, एम्प्लॉय का पर्पस कुछ और है, और वो इन लाइन नहीं है, तो सम डे या तो ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट ग्रो, ऑर्गेनाइजेशन विल एंड इट्स आई मीन एग्जिस्टेंस, या फिर एम्प्लॉय जो है वो छोड़ के चला जाएगा. स्ट्रेंथन योर वेलनेस प्रोग्राम. To boost wellness, consider offering stress management programs, online fitness classes, and money management webinars, and healthy recipe exchanges. Okay, you have to understand कि employees की problems क्या हैं, what employees want or what employees need actually after the office hours, or what employees need in their personal lives. So to boost wellness, आपको क्या stress management programs introduce कराएं, online fitness classes introduce करें, money management webinars, how they can manage their salaries, their financial benefits, and how they can keep themselves healthy. When people can tend to their own health and wellness, they are likely to be happier in their jobs. So communicate with your employees. It's time of uncertainty. It's important to be transparent with your employees about what is happening in the company and where things are headed. जब आप क्लियरली अपने एम्प्लॉयज के साथ रेगुलरली कम्युनिकेट करते हैं, ये हेल्प करता है आपको कि आपके वर्कर्स में एग्जाइटीज खत्म होती हैं, आपके वर्कर्स का फेयर्स खत्म होते हैं, आपके वर्कर्स ज्यादा इंगेज होते हैं कंपनी के साथ. सो क्रिएट कनेक्शंस अमंग एम्प्लॉयज. जब आप
आपकी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होंगे तो पीपल विल स्टे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑफर अनलिमिटेड पीटीओ. अब पीटीओ क्या है? This means employees have no limit on how long they can take time off as per their need, as long as they keep up with their workload and manage their time effectively. Right? Employees can take the time they need without traditional caps. We usually see with paid time off policies. I mean, up come up with different policies or benefits like this for the employees, and be empathetic. Workers who feel heard, understood, and cared for work harder, take more risks, and help others succeed. That in turn improves retention. देखें, वो वर्कर्स जो फील करते हैं कि उनकी बात सुनी जाती है, उनका फीडबैक सुना जाता है, उनको अंडरस्टैंड किया जाता है, उनके हार्ड वर्क को अप्रिशिएट किया जाता है, उनको रिकग्निशन दी जाती है, उनकी उनकी फैमिली का, उनके वर्क लाइफ बैलेंस का, उनकी उनकी पर्सनल सक्सेस का, उनकी पर्सनल ग्रोथ का, उनके सेल्फ पर्पस का, सबका ख्याल रखा जाता है. Those employees will take more risks and help others as well to be succeed. और वो आप तभी करते हैं when your all employees are improving themselves, when your all employees are getting better day by day, then then you can grow your other employees as well. मुझे एक मैक्सवेल की कोट याद आ रही है, which he wrote in some leadership book. There is no success without successors. राइट. सो सक्सेसर्स के लिए आपको सक्सेसर्स आप तभी बनाते हैं जब आप ऑर्गेनाइजेशन आपके वो एम्प्लॉयज जो टॉप पे बैठे हैं वो खुद भी इंप्रूव कर रहे हैं, दे आर टारगेटिंग समथिंग एल्स, सो दैट इन टर्न विल इंप्रूव रिटेंशन ऑफ योर एम्प्लॉयज. सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज राइट इट डाउन. और इस आर्टिकल का, इस ब्लॉग का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा ताकि वो लोग जो इसको कंप्लीटली पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकें. थैंक यू वेरी मच.